Hare Krishna, everybody. We welcome you all to this session on homeopathy, the myths and facts about homeopathy. A lot has been spoken about homeopathy during the current COVID pandemic. How useful it is it really working? Is it really helping in the prevention? So today we have two experts with us. That is Dr. Gopikrishnan Nambiar and Dr. Ram Subramanian. I will first introduce Dr. Gopikrishnan Nambiar because he would be Gopikrishnan, madam. Dr. Gopikrishnan Nambiar. I'm sorry about that, but that was I would be introducing Dr. Gopikrishnan Nambiar. He is a MD in homeopathy. He has almost 24 years of experience, and he has completed his study from the Rajiv Gandhi University of Health Science, Bangalore, in the year 2000, and he has stood second in his academics. So, heartiest congratulations from all of us, Dr. Nambiar. Very much. Now, I would request him to start the session. Before that, just brief that is, he is practicing in Goregaon since 2001, and his special interests have been in autism, skin and respiratory disorders, PCOD, and infertility. Now, I request Dr. Nambiar to take over the session. Hare Krishna. This is Dr. Gopikrishnan Nambiar. I am a consultant in Bhaktivedanta Hospital. I have joined Bhaktivedanta in the year 2002. So since then I am here in this prestigious organization. So today's topic is homeopathy and its benefits. So there have been a lot spoken about homeopathy. There are a lot of misunderstandings about homeopathy and whether it is effective or not. So we will be talking about the myths and facts about homeopathy today. So the homeopathy has been founded by an allopathic doctor in the 18th century, who was Dr. Samuel Hahnemann, and it has a lot of health benefits. It improves the energy, boosts immunity, and being holistic, it works with harmony with the immune system, providing long-term resilience. And it is safe, gentle, and natural system of healing, and it improves mental health, it cures chronic diseases gently, and it is regulated and recognized by FDA also. होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी की नेचुरल डिफेंसेस को ट्रिगर करते हैं और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. सो डिसीज़ेस को अंदर आने में उन लोग रोक देते हैं. फर्स्ट मिथ ये है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है. ऐसा नहीं है. होम्योपैथी इज़ अ रैपिडली इफेक्टिव एंड एक्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन. कई कई डिसीज़ेस जो क्रॉनिक हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनका सफरिंग चल रहा है, तो वो सब डिसीज़ेस में कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं. नहीं तो एक्यूट केसेस में होम्योपैथी इज़ इफेक्टिव, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं. सेकेंड मिथ ये है कि होम्योपैथी इज़ अगेंस्ट सर्जरी. कभी भी नहीं है. होम्योपैथी सर्जरी के खिलाफ तो है ही नहीं. जो सर्जरी इंडिकेटेड सिम्टम्स है, डिसीज़ेस है, उसमें सर्जरी करना है, जैसे हर्नियाज इन एडल्ट्स एंड एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज. बाकी प्योरली सर्जिकल केसेस में सर्जरी करना ज़रूरी है. उसके लिए होम्योपैथी कभी भी अगेंस्ट नहीं है. लेकिन सम ऑफ द सर्जिकल केसेस या फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, टॉन्सिलाइटिस, ये सब चीज़ें हम बिना सर्जरी के होम्योपैथी के थ्रू क्योर कर सकते हैं. थर्ड मिथ ये है कि विटामिन, आयरन टॉनिक्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ नहीं लेना है. ऐसा कभी भी नहीं है. फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ या कोई भी ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए. तो जब बॉडी इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सप्लीमेंट्स को, बॉडी वीक है, तभी हम सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि आजकल सब लोग इंडोर्स है, घर के अंदर हैं, तो विटामिन डी की ज़रूरत कम, शरीर में विटामिन डी कम पड़ती है. ओके, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो इसके लिए भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है. सो होम्योपैथी कभी भी सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं है.
फोर्थ मिथ ये है कि कॉफ़ी, ऑनियन, गार्लिक ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये सात्विक फूड तो है नहीं, लेकिन किसी किसी को आदत है कॉफ़ी की, तो हम बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त उसी टाइम पे कॉफ़ी मत लेना, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेने की आदत है तो वो मना है, और मेडिसिन के हाफ एन आवर के आगे पीछे ये सब चीज़ें लेना नहीं चाहिए। फिफ्थ मिथ यह है कि होम्योपैथी कैन नॉट बी टेकन विद एलोपैथिक मेडिसिन और अदर मेडिकेशंस। ये बिल्कुल गलत है, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों सिस्टम। और हम हमारे हॉस्पिटल में भी इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट से दोनों मेडिसिन दे के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। जब दोनों मेडिसिन साथ में देते हैं इफ़ेक्ट अच्छा आता है, और कभी भी कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट होम्योपैथी है नहीं। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन मदद करती हैं। सिक्स्थ मिथ यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स है। ये बिल्कुल गलत है, होम्योपैथिक में कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं है। बिकॉज जब होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, 2-3 दिन में होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट दिखने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है, स्टेरॉइड जैसी चीज़ है जो बॉडी को रिजल्ट डिसीज में क्योर करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देयर आर नो स्टेरॉइड्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन, इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड इट डजंट हैव साइड इफेक्ट्स। Myth 7 is homeopathy as a herbal medicine या it's a placebo treatment. होम्योपैथी में हर्ब्स है, लेकिन नॉट जस्ट प्लांट्स, इसमें केमिकल्स भी है, मिनरल्स भी हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, ये सब से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। होम्योपैथी इज यूज फॉर मोर देन 200 ईयर्स। मैंने बोला कि 18th सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने ये फाउंडेड किया है, तो एंड इट्स यूज्ड इन ओवर 170 कंट्रीज। एंड काफ़ी सारे साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है होम्योपैथी के ऊपर, और इट इज़ बीन प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट अ प्लेसिबो। एट्थ मिथ है कि इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट्स, ये सब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, सभी सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि डायग्नोज करना पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनको टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये डायग्नोज करके उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट तय कर सकती है। सो ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी लेते वक्त शुरुआत में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, कि हमेशा होम्योपैथी ये बढ़ा देते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद कम करती है। ये गलत है। कई कई डिसीजेस में, जैसे क्रॉनिक एक्सिमा है, ब्रेथलेसनेस है, उसमें सप्रेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट किया है, तो जब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा ये बढ़ सकती है, अपने आप ये कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन देते वक्त उनकी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप होम्योपैथ से बात कर लीजिए, नहीं तो ये उसका नहीं है, प्रॉब्लम खाली क्लियर हो इसका ही था, जाएगा। पूजा का ही है। ओके। 10th मिथ है कि होम्योपैथी वही वाइट पिल्स देते हैं, वही साबुदाने जैसा गोली हर एक ट्रीटमेंट के लिए, खांसी लेके आओ, खुजली लेके आओ, कैंसर लेके आओ, वही साबुदाना देते हैं। लेकिन दीज आर वाइट शुगर पिल्स, these are the carriers of homeopathic medicines. Medicines are sprinkled into them and the potent medicine is absorbed into the white pills. और मैंने ये फोटो में दिखा है कि पिल्स फॉर्म में भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। हम इसीलिए प्रेफर करते हैं कि स्वीट पिल्स, सब लोग को मीठा पसंद है, तो बच्चों से लेके बड़े तक सब ये पिल्स इजीली ले सकते हैं, और पिल्स में ये मेडिसिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है स्वीट से, स्वीट्स नहीं लेना है और बहुत फ्रीक्वेंटली देना पड़ रहा है मेडिसिन, तो हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। एंड थर्ड मोड ऑफ डिस्पेंसिंग इज लाइक टैबलेट्स। टैबलेट फॉर्म में ये दे सकते हैं, जैसे कि योक्रोसिन का वगैरह टैबलेट एलोपैथी में आते हैं, ऐसे टैबलेट्स हम अपनी क्लिनिक्स में बना सकते हैं। देयर इज अ डिस्पेंसिंग मशीन, सो ब्लिस्टर पैकिंग भी होम्योपैथिक में पॉसिबल है।
There are more than 3,000 medicines in homeopathy, and there are 10 variable powers of these medicines. 11th myth ये है कि homeopathy cures all diseases. Actually कोई भी सिस्टम में सभी ट्रीटमेंट का क्योर नहीं होती है. अल्टीमेट क्योर इज विद द गॉड. सो ये गलत है कि अभी कोई बोलते हैं कि होम्योपैथी में सभी ट्रीटमेंट हो जाती है, सब डिसीजेस ठीक होते हैं. सब सिस्टम को अपना अपना स्कोप एंड लिमिटेशंस हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी बिफोर ट्रीटिंग. नाउ ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट होम्योपैथ आपको तरह तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो काफ़ी लोग क्लिनिक में आके भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि मुझे खांसी है. ये क्यों रिलेवेंट है कि मुझे गुस्सा आता है या मैं रोता हूँ, मेरे अकेले बैठने अच्छा लगता है, ये सब क्यों पूछते हैं. होम्योपैथी एक्चुअली आपको इंडिविजुअलाइज करते हैं और एक इंडिविजुअल को जो बीमारी है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. तो सिम्टम्स आपके सभी, जैसे कि मेंटल सिम्टम्स हो, इमोशनल सिम्टम्स हो या फिजिकल सिम्टम्स हो, सभी ऑल टुगेदर कंसिडर करके आपका सही मेडिसिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं क्या देना है. So this will help you help the doctor in prescribing the right medicine. So homeopathy जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है. You answer it wrongly, he can always prescribe you a wrong medicine. So your symptoms, your mental symptoms, your emotional symptoms, all the problems has to be discussed very clearly with your homeopath. Now homeopathy is effective in wide range of हेल्थ कंडीशन, जो आस्थमा है, ईयर इन्फेक्शंस, एलर्जीज, एक्सिमा, मेंटल कंडीशंस, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैरानोइया है, ये सब चीज़ में होम्योपैथी काम करते हैं. और पीसीओडी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, बच्चों में ऑटिज्म, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, आईबीएस, आर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, ऐसे काफ़ी चीज़ों में होम्योपैथी अच्छा रिजल्ट देते हैं without causing any major side effects. So I will be showing you few slides wherein I have treated these cases in hospital as well as in my clinic where I've got excellent results. So मैं अभी ये cases के बारे में आपको बताता हूँ. First स्लाइड है एक अल्सर पेशेंट के. इनको काफ़ी साल से पैर में अल्सर थे और काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके थे. उसके बाद मेरे पास आए और आप देख सकते हैं किस हिसाब से वो जो धीरे धीरे कम होते गया है. And then she is completely cured. This is only with homeopathic medicines. So this is a result of homeopathy when we treat properly, what results we get. सेकेंड स्लाइड भी एक अल्सर पेशेंट का है. इनकी खून की सप्लाई उस तरफ कम हो रहा था और उनको पिछले 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम था. एंड ही हैज़ इवन अंडरवेंट सर्जरी फॉर दिस प्रॉब्लम. सो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड में उनकी जो अल्सर है बिल्कुल सफ़ेद जैसा था, खून की सप्लाई कम था और लेग वाज कोल्ड टू टच. सो सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हैं कि थोड़ा उसमें खून की जो रेडनेस आया है. एंड थर्ड स्लाइड अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द वुंड इज हील्ड. सो द लॉन्ग कट मार्क व्हाट यू आर सीइंग इज द ऑफ द सर्जरी. सो सर्जरी के बाद ये कंडीशन था और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ये. नाउ दिस इज अ केस ऑफ वाट्स. बच्चों के हाथ में सभी उंगलियों में आप देख सकते हैं वाट्स आया है. वाट्स आर वायरल इन्फेक्शंस. सो इनके केस में पहले उनको आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड के डोरसम में वाइट पैच एक देख सकते हैं. तो वहाँ पे वाट्स था. उन्होंने उसको जाके कॉटरीज किया, मतलब जला के निकाला था. इट्स अ मोड ऑफ सर्जरी. तो उसके बाद जब स्प्रेड हो गया तो उनका सभी उंगलियों में, सारी उंगलियों में आ गया और राइट हैंड के मिडिल फिंगर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ख़राब है. तो इनके ट्रीटमेंट में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है डेफिनेटली, क्योंकि इनिशियली ये जो वाइट पैच जिधर उन्होंने कॉटराइज करके निकाला है वो सारे वॉट्स वापस आ गए थे. उसके बाद धीरे 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 ये उनको अराउंड 8 to 10 months लगा मुझे ट्रीट करने में. लेकिन यू कैन सी द सेकेंड फोटोग्राफ एंड ऑल द फिंगर्स आर एब्सोल्युटली फाइन.
Now, this is a case of molluscum contagiosum. These are shiny, pearly, white eruptions, and this is also a viral infection. जबकि चेहरे पे आया है बच्चे का, बच्चों लोगों में ये ज़्यादा दिखाई देता है, बड़ों में भी आता है. मुझे काफ़ी पेशेंट्स आया हैं जो अडल्टहुड में भी ऐसे इरप्शंस आते हैं. एंड यू कैन सी द चेंज आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी. नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ व्हाट, आई के कॉर्नर में इतना बड़ा मसा था उनका. एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. मैंने एक फर्स्ट और लास्ट फोटोग्राफ मुझे मिला है वही लिया है. तो लास्ट फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं इट हैज़ बिकम वेरी स्मॉल. इसके बाद ये पेशेंट मुझे पास वापस नहीं आया, कंप्लीटली हो गया था, मेरे से फ़ोन पे बात हो गया था, बट आई कुडंट टेक अ फोटोग्राफ बिकॉज इट डिडंट कम बैक. बट यू कैन सी द डिफरेंस, कितना फ़र्क है. नाउ दिस इज़ अनदर केस ऑफ वॉट. यू कैन सी यहाँ पे जो वॉट दिख रहा है आईलिड पे, सच अ बिग वन, एंड सेकेंड फोटोग्राफ में कम्प्लीटली गया है. दिस पेशेंट हैज़ कम टू मी वेरी लॉन्ग बैक, मेरे ख्याल से 10-12-15 साल पहले की है. और इन्होंने कुछ स्किन कंप्लेंट के लिए मेरे पास आए थे. तो इंसिडेंटली मैंने नोटिस किया इनके सर पे इतनी सारी जगह पे बाल गया है. तो मैंने पूछा ये क्या हुआ. मैंने बोला नहीं, काफ़ी टाइम से ऐसा है, कुछ ठीक नहीं हो रही है, मेडिसिन काफ़ी किया. तो मैंने बोला ये भी ठीक हो सकता है. देन ही सेड ओके लेट अस सी, एंड यू कैन सी द चेंज, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. So these are the changes what we can get in homeopathic treatment. Now, this is another case of alopecia, wherein hair पूरा चला गया था, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, and then you can see how easily the hair has come back without any application, without any injections, which are without any hair transplant or anything. The hair has grown back to the fullest. Now, this is a case of what, again on the soul. This case has been referred by a senior consultant from our hospital itself, and you can see the results. We got a result in very, very quickly. In a few weeks, the what is completely gone. Now, the last slide where I wanted to say where homeopathy works. These are difficult cases, infertility. This is a case of infertility wherein they have taken a lot of treatment and they couldn't get a result. So after treatment, I heard she became pregnant, and then I did not know what happened. So I messaged them. I've removed the number and the date to keep the privacy on. So then after some time, I got this message: sorry sir for late. This is a result of your treatment. And so in infertility cases also homeopathy works wonders, and we get wonderful results in these cases. So that's all from my side now. Thank you very much. And if there are a few questions, I think there are. Yeah. So Yes, I think there are few questions, yes. So I'll answer them. So doctor. One, oh, why is, yeah. Are you able to see? hello. क्वेश्चन नहीं देख रहा है. To know why is the government? एक चैट में है. Yeah, somebody wants to know why is the government of India not recognizing? Hello. Hello. Yes. Yeah. Can you hear me, doctor? Yes. See, Yeah. government of, I mean, this is a wrong thing. I mean, government of India has recognized homeopathy. We have government medical colleges and dispensaries, and in down south and north, we can see a lot of government services in homeopathy, which is happening. Maybe in Maharashtra, the government involvement is slightly less, but then all over India, we have a lot of government medical colleges. We have a system
Ministry of Ayush, which deals with homeopathic system, and it is recognized by government of India, and we are getting equal importance in all the system of all the treatment also. There's no problem in that. So another question is, I have taken treatment for asthma for my child. Can you explain how exactly it works to cure asthma? इसमें थोड़ा elaborately explain करना पड़ेगा. Maybe in the short time I won't be able to explain completely, but then still the way homeopathic medicine works, वो अभी तक exact कैसा है वो अभी तक मालूम नहीं है. But then asthmatic patients में we have to find out what is the reason first, whether they have any genetics, whether they have allergies or anything other than that, and food allergies. All these things consider करने के बाद, then we will be able to address the symptoms. And symptoms लेने के बाद हम decide करते हैं कौन सी medicine उनको देना है. ये मेडिसिन देने के बाद that medicine will be exactly a matching medicine for the child as well as the symptoms. So उस हिसाब से ये मेडिसिन काम करती है और अस्थमा क्योर करते हैं. Any more questions? Any more questions now? And if there is anything more, you can definitely contact hospital and reach me in any of the modes that is possible. You can call up Bhaktivedanta Hospital to talk to me, or we can use Google search. My details are available on Google. You can contact me directly also. There won't be a problem. So, and then you can talk to me anytime, whenever it is possible. There's no problem. There's one more question. Is there, do you have treatment for insomnia? Yes, we do have treatment for insomnia. First is that we need to find out why the person is having insomnia. We need to find out the reason exactly कि उनका biological clock का problem है, या there are other problems, whether he is taking any tablets, medicines की वजह से हो रहा है. बिकॉज इनिशियल टाइम में मैंने एक केस स्टडी किया था जिसमें एक बच्चू था जिसको स्लीपलेसनेस होता था. And then I read that a lot of medicines are being given. Then the doctor went into the details. This was during my student life. So we came to know that the last thing what the child does is the father comes from work and gives him a chocolate, and this was the triggering, the sweetness and the Cadbury, the cocoa in that was making the child awake through the night. So definitely we have treatment in insomnia with homeopathy. Anything else? So we can hand over to Dr. Ram Subramanian for the next session, the pediatric part of it. I think we should go ahead. There are no other questions. Hare Krishna, am I audible? Yes. Yeah. Now we would request Dr. Ram Subramaniam to start the session. I would just introduce Dr. Ram, who's been associated with us for a very long time, and he's a MD pediatrician, and he has done his DCH from the Sion Hospital and MF from London. He has started his career by starting his own 25-bedded Dr. Ram's Children Hospital at Mulund. He has a successful practice for nearly 20 years, where he used to see almost 150 patients a day. He's successfully running, currently he is associated with us,
and he has a 20. So I would now request Dr. Ram Subramanian to take over the session. Dr. Ram, request you to start the session, please. Good evening, everybody. And just a small introduction. My name is Dr. Ram. It so happened that a few years back, I had a side effect of malaria medicine. And then I had to be treated by a homeopath because I was bedridden for almost 2 months. Then my friend's mother, who was that time 80 plus, she gave me medicine for 2-3 days and I was cured. So then my belief in homeopathy increased. And after that, I switched over to homeopathy. And since then, till date, I've been practicing homeopathy. So I will cover homeopathy plus more patients and mothers are more interested in knowing about general conditions which I come across. So mostly the common conditions which we come across in our practice, especially what I have come across in so many years, the most common problem is not eating well, not putting on weight, frequently falling sick, height not increasing, poor concentration, and hyperactivity. So we'll go step by step. Now, not eating well. I always explain to my mother what my teachers have taught me. I tell them that the stomach of the child is like a tadgola and the stomach of an adult is like a bhopla. So you desire that tadgola to have everything like a bhopla, so much space, and that is not possible. So I always tell them the moment the child says no or shifts the mouth, you have to stop. Then only you can, control this not eating well. Second important reason is too much force feeding. I have seen in my practice, they, jabardasti they will take and then the child will go to the neighbor's house and eat idli and dosa. Then they feel very sad about it. Third important thing in children is children don't like change. They will only change when they see their friends. So up to first standard, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years and all, they will eat whatever they want. Once they go to their first standard or proper school, see their friends bringing different dabbas, then only they will start. So you cannot force the child for anything. And fourth important thing is children teach you patience. You have to be extremely patient with children. There is no quick method. You have to be extremely patient with children. Now, not putting on weight. This is a very, very common complaint. So I explained to them what is the normal weight. Because most patients, they don't know only. So even for those who are watching, maybe parents, maybe doctors, maybe paramedical, I will give you a simple formula. See, the normal weight at 2 years is 10 kilos. Simple. After 2, the formula age plus 4 into 2. Say, for example, the child is 3 years old. So 3 plus 4 is 7. 7 into 2 is equal to 14. So this formula works from 2 to 6 years. Same thing for 4 years. 4 plus 4 into 2 is 16. So 4 years child will be 16. After 6 years, up to 19 years, the children's line is up to 19 years because that is the last teen. The first teen is 13, 14, 15, so 19. So there the formula is age into 3. So 6 years will be 18 kilos, 10 years will be 30 kilos, and 9 years will be maximum 57 kilos. So plus minus 5 to 10% is okay. But if supposing instead of 10 years 30 kilos, the child is 70 kilos, then he is overweight. Whereas for 10 years, the child should be 30 kilos and the child is only 13 or 14 kilos, then he is quite undernourished or he is even marasmic, which we see in certain vast, tribal areas, underdeveloped countries, etc. So you should know the basic. If you want, I'll repeat again. At 2 years, it is 10 kilos. 2 to 6, the formula is age plus 4 into 2. And after 6, up to 18 years, the formula is age into 3. And you can give a grace of 5 to 10%. So your own child's weight you can easily calculate and you can understand. So that is very important. Third most important condition which I see in practice is frequently falling sick. Frequently falling sick means what? What are the common conditions? Commonest conditions are all respiratory conditions.
of which the commonest is tonsillitis, second is bronchitis, third is asthma, allergic asthma. Sometimes you get throat infections, upper respiratory throat infections. So these are the commonest, most common in children practice. Second important are skin problems. Skin problems, you can get eczemas, small eczemas at birth, atopic eczemas. They can come again in older life. Sometimes you get recurrent boils. Recurrent boils are very, very common in children. Pyoderma, which we call in the medical line. Third common thing in skin is insect bite allergy. Very, very common. And fourth important is urticarias, red patches. And I have been in Bhaktivedanta plus what you call in my own practice. And these 8 or 10 conditions are the commonest. And believe me, 95 to 99% of the times they have been cured by homeopathy. It is just fabulous, as Dr. Nambiar showed all these slides. So this is wonderful for children because children already there, the reason for falling sick is low immunity. See, immunity, I will explain now. Immunity is the talk of the town, talk of the world for the next few months to few years. Immunity is like a balance. Seesaw balance when you go to the garden. So it is see or saw. Either it will go up or down. But to maintain it at the center is very, very tough. Do you agree with me? So immunity is also like that. It is very tough. You cannot maintain the body's immunity at the center level. And it affects by various. Now, for example, all these viral infections, then rainy season infection, environment, cold weather, warm weather, so many factors are there. Plus mental factors. We call it as PTF triangle. Parents' problems, teachers' problems, friends' problems. So all these factors together affect the immunity of a child. Immunity, our teacher used to compare it with spirituality. See, spirituality also, you cannot overnight become spiritual. It takes a time. It takes you months and years and then continuous. Same thing, immunity. Immunity is not built over in days. It may take months or years. So what are the main things which you have to do for immunity? Immunity, the easy way to remember is easy mnemonics, is NERAS, N-E-E-R-A-S. The full form is N stands for nutrition. I will discuss nutrition later on. Nutrition, high protein, etc. Second is essential supplements. Children definitely need calcium, they need iron, they need multivitamins, fruits and vegetables, etc. N-E. E is exercise. Nowadays it is not possible, but at least half an hour, 1 hour, child should play in the evening. So E is exercise. R is rest. Usually the child should sleep for 8 to 10 hours. But today in this jamana of mobile and screen, it has become very rest. Children along with the parents are sleeping at 12 and 1 o'clock. And next day morning is the online class at 9 o'clock. So they feel sleepy and groggy in the morning itself. So these are all social problems or what we call as environmental problems. So N-E-E-R-A is attitude. Attitude doesn't depend on the child. Attitude depends on the attitude of the parents. If parents have negative attitude, it goes into the brain of the child. The child also becomes negative. They have done a research and they have found, this is true fact. It has come in Reader's Digest. It has come in medical books also. The word no, he karunako, te karunako, te karunako, the child hears 1.5 lakh times up to the age of 18 years. I'm repeating again, the word no, the child hears up to 1.5 lakh times up to the age of 18 years. And the word yes, you are great, you are the best, you are my this thing, princess, etc. The child hears only 50 times. Imagine up to the age of 18 years itself, the attitude of the child has become negative. So negative attitude is very important. You have to control that. So that is why a lot of people talk about sakaratmak, positive, etc. And last is spirituality. You have to put at 5 years, 6 years, some amount of spirituality. Whatever be your religion, you have to chant your Jai mantras or your Islam or your Christian. Every what you call religion, Hindu, Maha Mantra, everything has got the same cycle. So you have to make the child tuned to it. Spirituality is a
kya bolte hai, it is the crux of everything. So that is how immunity builds with everything. We will discuss about nutrition later on. Okay. So I discussed about what we call immunity. I discussed about frequently falling sick. Height. The normal height, easy way to remember. At 4 years, they reach 100 centimeters. After 4 years, the formula is 5 centimeters per year of age. Okay, easy formula. 5 centimeters per year of age. If the child is 10 years, at 4 years, already it has reached 100. So 6 years, 6 5s are 30, it will be 130 centimeters. And this you can convert into 5 feet, 4 feet or 2 inches, etc., etc. Because in our country, even centimeters doesn't work. 4 foot 2 inch, 4 foot 3 inch. That is how people understand. So, but I tell them that there are 2 things for which there is no medicine. People say height kaisa badhane. So I tell them height or buddhi ke liye dawa nahi. There is no medicine. And don't get cheated. Ye karo, wo karo, jump karo and all. Because it is totally genetic. 90% is genetic. Or you have some other growth deficiencies, etc. So very important is focus on things which can be treatable. Okay. And most important is nowadays, this poor concentration and hyperactivity has become too much. And the main reason people say genetic, hereditary, etc. But the most important thing is screen time. It has created havoc. See, the child starts playgroup at 2 years. Primary, junior, nursery at 3 years. Junior KG at 4 years. Senior KG at 5 years. And first standard at 6 years. So 2, 3, 4, 5, it enjoys this, that, nursery, etc., fruit, apple, beetle, etc. But what happens at first standard is suddenly there are 3 things bombarded. They are called as 3 R's. Reading, writing, arithmetic. So these 3 R's plus 4 years the child has enjoyed the TV and mobile screen time maximum. So the brain is totally confused. It has become like a, it has become like a, completely chaos brain. In that chaos brain, you are adding more of the 3 R's, fatafat. In second standard, again, science comes, then computer comes, then language comes. So all these the child is not able to tolerate because already because of screen time, it has created havoc. And this has led to a lot of hyperactivity, ADHD, autism. We call it as autism spectrum disorder. It's a spectrum. They become violent, their behavior, so many other things. And these are all become social problems. Even now during Corona time, mothers are finding it difficult to control them. Because see, normal screen time in textbooks is 2 hours per day. After coming from school, child can sit for half an hour, then sometimes with family for half or 1 hour at night. But now with lockdown, it has gone from 5 to 9 hours. Can you imagine? 5 to 9 hours per day is the average in the whole world. So what is going to happen post-corona, only God knows. Because that is the condition. So that is why screen time has produced all this. And we have got very good medicines in homeopathy, and which will calm them down. Okay. So I have discussed about normal weight, normal height, etc. So screen time should be averagely about 2 to, now in Corona, say 3 to 4 hours, but averagely 2 hours. Very important is mothers ask when to buy a mobile and give it to a child. See, normal age for mobile, according to our books, is between 10 to 12 years. So somewhere in 5th standard or secondary section, you should give a mobile. But nowadays, parents, because they also are fed up and they want to keep the child quiet. So, they give it a little early, 8 years, 9 years. But wait for 10 years, 12 years and, make them, convince them that this is not the age, you are not allowed to take it to school, etc., etc., etc. Because it's creating real havoc. It is beneficial, plus both the problems are this thing. And most important thing is, mothers always ask, what should I give to eat? There is no mother in my years of experience, she will not go out of the clinic without asking the question, khane mein kya dene ka? And doctors are so busy, they will say, thanda khatta ke siwa baki sab de. So thanda khatta has become a dialogue. They are also fed up. They don't want to hear that same dialogue again and again. So I will give you some basic things. Madam, can I have the slideshow? Slides, 2-3 slides. Yes, sir, I'm sharing. Yeah, only 2-3 slides.
Yeah. See, this is the most important slide for our entire life. See, we have been taught about nutrients in primary section. We have been taught in secondary section. Board exam, those who take science, they have to learn about nutrients. Then afterwards, it will not leave you, because tomorrow, now after my lecture also, you have to eat something. Again, now tomorrow you have to eat. For lifelong you have to eat. So basically, you should know that there are 3 major and 5 minor nutrients. The major nutrients are called as, in now new generation calls it carbs. They form about 55 to 60% of our food. So they are all cereals like rice, wheat, jawar, bajra, maida. Then all sugars, all vegetables and fruits and fibers. Now, easy way to remember. Nowadays, everything is called as good virus, good bacteria, bad bacteria. So good carbs and bad carbs. So good carbs and bad carbs. First, you should see what is bad carbs. Anything which is sweet is bad. Easy way to remember, when you go to a Bengali sweet shop, all sweets. So that is a bad carb, because it gets converted to glucose very fast. So over a period of time, over many, many years, your sugars start rising. So bad carbs is one, is all Bengali items. Second is all bakery items. You go to a baker, what all do you see? You get toast, you get pav, you get naan kata, you get cakes, you get pastry. So I am teaching you easy methods how to remember which are bad carbs. So what is remaining? So remaining is good carbs. Good carbs are always vegetables, fruits and fibers. Fibers means where you get these dhar, like dudi, bhokla, padwal, wherever there is, they act like a jhadu. They act like to clean the intestine. The fibers are very, very important. Out of this 60%, almost 20% should be fiber. So carbohydrates, what is the function? So you understood the source, you understood the daily requirements. We should have about 400 grams per day. Children should have half, about 200 grams per day. Easy way to remember. And proteins. Now, benefits of carbohydrates. Most important, carbohydrates are required for energy. You are hungry, you eat something sweet, have limbu sarbat, padak, and you will get energy. So energy is the only word which you should remember when you think of carbs. Next is protein. Protein is the word itself is very important. Protein. Pro means first. Teen means substance. First substance required from birth to the end. Now proteins are 20% of our food, 15 to 20%. So all milks, dals, pulses, non-veg food, etc. Proteins have 3 important functions. One is growth and repair. Growth is for a child. So from birth to the teens, what you call child needs more. Normal is 1 gram per kilo. Children, we say 1.5 to 2 grams per kilo, because child's growing phase it is. So growth is from the birth to the teens. So they constitute growth and repair. Repair will come after 25, 30 till the end of your life. So for repair also it is required. And so this is the major function of proteins. Second, it is for building muscle and blood. Hemoglobin is formed, heme and globin is formed by protein. And last but not the least, the most important word today on Mother Earth, which everybody talks, is immunity. So immunity, all the immunoglobulins are all proteins. So when you take proteins, that is why doctors say post-COVID, pre-COVID, everything, you increase your proteins. Third is fats. So fats are emergency, reserve energy. Therefore, reserve. They should be very less. So they are only about 10 to 15%. So how to remember fats? Fats are solids at room temperature, are bad fats. Like ghee, vanaspati, dalda, etc. are solids, So they are, except coconut oil, which is liquid, but it's a saturated fat. Saturated means fully loaded. And liquid at room temperature are unsaturated. So today, they keep on changing. Cardiologist will say sunflower is good, then he will say this safflower is good. At present, olive oil, groundnut oil, rice bran, and safflower. So then it will keep on changing after 5-10 years. Now you remember this, that is more than enough. So it is for reserve energy. Reserve energy means for emergency. Here, for example, somebody has got cancer and he is losing his muscle protein. Then the first thing to go will be fat. He will lose weight. So more important, it's a reserve energy. Body has to survive. Body needs energy. So it will take fat. Then finally it will be protein.
So that is how the body mechanism acts. Minor is very important. Minor is vitamins, minerals, water, antioxidant, phytofactors. Antioxidants you should know now. Everywhere everybody is talking about vitamin C, calcium, zinc, blah, blah, blah. Antioxidants are to neutralize free radicals. Simple. So what are free radicals? Free radicals are bad chemicals produced because of SRPW. So what is SRPW? Stress, radiation, pollution, and wrong habits. Again, I'll repeat. Antioxidants neutralize free radicals. So what are free radicals? Free radicals are bad chemicals produced due to excess of SRPW. And out of SRPW, stress, radiation, pollution, wrong habits. Stress is 80% in adults. Imagine. Nowadays, that is also increasing in children also. That is a lot of problem. So antioxidants, easy way to remember, 4 antioxidants. ACEs, vitamin A, vitamin C, vitamin E, and selenium. So these are the most important antioxidants which are there. And they neutralize. And stress out of the 4 is 80%. Can you imagine? That is why so many problems, heart, this, that, etc. What are phytofactors? Plant concentrates. Nowadays, WHO says that you have to eat 5 vegetables and fruit servings per day. 2 vegetable servings everybody has. But that through 3 fruit servings, instead of having per day, they are having 3 fruit servings per week. That is why there is a deficiency. Just as we need, plants, phytofactors, their chlorophyll, how plants need our oxygen and carbon dioxide, they need carbon dioxide. Same thing we also need that. That is why cows and all thrive, because they eat a lot of plants and vegetables and fruits. So nowadays, every paper, newspaper, COVID, BVD, you ask, everybody will see full fruit cow, protein cow, protein cow. So this has become like a bhajan now. Okay. So very important, even though it is 5 to 10%, my teacher, Dr. Athavale, used to say that it is like a button. You know this button? Now I am wearing a button. So protein, carbohydrate, and vitamin is like a shirt. And protein, carbohydrate, and fat is like a shirt. And vitamin and mineral is like a button. So it converts this protein, carbohydrate, and fat into energy. That conversion arrow is there. In school we learn chemistry. That conversion is due to this catalyst vitamin. So even though vitamin is like a button is important or no? Button covers the entire shirt. So similarly, even though vitamins is in microgram, they are very important to convert what we call protein, carbohydrate, fat into energy. That is why the whole world is saying have vitamin C, have calcium, have vitamin D, and have vitamin A, etc., etc. Next slide, sir. Yeah. So this is a diagram everybody has seen in all school books and all. I don't have to go through. Fats is only 5 to 10%. Then second is our proteins about 15 to 20, 25, and carbs should be 55 to 60. Next slide, sir. Yeah. So normal protein required. Protein is the boss for everything. 1 gram per kilo body weight. So if your weight is 60, you need 60 grams. If your weight is 70, you need 70 grams. But they have done survey, they have done research all over the world, especially in India. Kitna bhi diet hum total karenge, whatever you total, it will come to only 60% of requirement. So supposing aapka 70 grams chahiye, your total karenge, so it will need only about 45 to 50. That is why there is a gap of protein. That is why you need to have extra protein. And if you have extra protein, your immunity will raise. Protein ka ek din jaisa nahi, immediately it doesn't improve your immunity. So everything is a gradual process. That is why. Whereas for adults, say jada, children need more. You see the calculations. 1.5 to 2 grams per kilogram. So supposing a 10-year-old child is doing sports activity, blah, blah, blah. So uska 30 into 2 karega to 60 or 30 into 1.5 karega to 45. Itna gram to chahiye hi chahiye. So this demand is more in physiological states. Physiological means body ka natural. So one is pregnancy, children, lactating mothers, and exercise. इसमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए. Pathological states, जब भी demand protein का ज़्यादा रहेगा. Recovering from acute illness like viral fever, COVID fever, malaria, typhoid, dengue, pneumonia, chronic diseases like TB, diabetes, cancer, AIDS,
सब में आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, बिकॉज इट हैज टू रेज योर इम्यूनिटी एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर रिपेयर. तो प्रोटीन इज द बॉस. नेक्स्ट, या वेजिटेरियंस का तो बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज उनको इतना मिलता नहीं है. कितना भी करेगा तो they reach only 70% of their requirement. That is why we tell them to take what you call more proteins. Next slide. Yeah, ये slide का you can take snapshot. ये most important slide है. I will just explain कि ये passing mark दिया है. Passing mark देख रहे हैं? इस passing mark is 50 marks. Normally क्या होता है, मेडिकल में 50 marks चाहिए, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 out of 100, बोर्ड एग्जाम में 35, प्रोटीन में 70 से ज्यादा होएगा तो इट इज कॉल्ड ए क्लास प्रोटीन, 70 से कम होगा तो ये बी क्लास क्लासिफिकेशन है. तो इसमें क्या है, ये कॉलम देखना, बायोलॉजिकल वैल्यू. एक को 100 दिया है, WHO ने क्या दिया है 100. एंड वे, जो पनीर का पानी है, जो जिम में सब लोग वे प्रोटीन खाते हैं ना, दैट इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इन मदर्स मिल्क. दैट इज व्हाई यू विल से बच्चा 2.5 किलो का पैदा होता है और 1 साल के अंदर 8 किलो एंड 2 साल के अंदर 10 किलो. So whey protein goes directly to the muscle. So that is why they tell in gym to have whey protein. Plus a child also, you can see the muscle is grown. तो छोटा बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है 1 साल में. So whey is 104. Whey basically is पनीर का पानी. पनीर को बना के, जो हम पनीर को खाते हैं वो पानी को फेंकते हैं, सच्ची बोला उसका पाउडर बना के ये लोग बेचते हैं 4,000 रुपए किलो, 8,000 रुपए किलो. So whey protein is very important for muscle building. मिल्क को मार्क दिया है 91, कर्ड्स को 81. सो ऑल मिल्क, वेजिटेरियन को खाली 4 ही सोर्स है, मिल्क, चीज, कर्ड्स, पनीर, सब 80 to 85 के बीच में. नॉन वेज वाले का चिकन, फिश और मटन, वो भी 80 to 85. सोया इज वेरी गुड. आई शुड टॉक अबाउट सोया. सोया मैक्सिमम इंडिया में बनता है, बिहार एंड मध्य प्रदेश में. घर की मुर्गी दाल बराबर, पूरा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका और चाइना. चाइनीज लोग और जापानीज लोग और क्या ताइवान बीवान सब वो कोरिया पूरा सोया 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 सोया. अमेरिकन भी सोया. हमारे इधर अभी लास्ट 20 साल से वो गवर्नमेंट बोलता है ना 5 गेहूं में 1 सोया डालना, तभी तो मालूम पड़ा कि सोया मध्य प्रदेश और बिहार में ग्रो हो रहा है. तो सोया बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एन ए क्लास प्रोटीन. ए क्लास कोई फंक्शन, क्या तीनों फंक्शन जो मैंने बोला था, ग्रोथ एंड रिपेयर, इम्यूनिटी और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ए क्लास में है. तो ए क्लास का प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए. सोया खाना चाहिए. सोया मार्केट में अवेलेबल है, पाउडर है, ग्रैन्यूल्स है, कोई कोई मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स भी है. यू गेट इन सम प्रोटीन्स, यू गेट न्यूट्रलाइट प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स में यू गेट गुड व्हाट यू कॉल सोया. तो सोया इज अवेलेबल. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज बी क्लास. बी क्लास में मल्टीपल माइनर फंक्शन. आप गूगल में जाके माइनर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स करेंगे, कम से कम 50 फंक्शन, एंजाइम, ये वो रिएक्शन, इधर भी देखिएगा तो 50 फंक्शन, नेल, ये हेड टू टो प्रोटीन चाहिए. तो क्या है कि नॉर्मली वी शुड गिव अ बिग हैंड कि अपना इंडियन डाइट इज वेरी बैलेंस्ड. बिकॉज क्या है, हम लोग दाल, चावल, सब्जी, रोटी. तो दाल कम्स एज ए बी क्लास प्रोटीन. स्प्राउट्स इज आल्सो वेरी गुड, 45 एंड नट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है कि हमारे ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मदर्स लोग के दिखा रहा हूँ कि वो डब्बा में क्या क्या डाल सकते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डब्बा में डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं आप सुबह टिफिन में. बिकॉज लंच कभी कभी स्कूल देती है, कभी कभी आके खाता है, तो ब्रेकफास्ट का ही मेजर प्रॉब्लम होता है. ब्रेकफास्ट में क्या होता है, कभी कभी ब्रेड जाम देता है, इडली देता है, थेपला, ढोकला, उपमा, पोहा एक्सेट्रा. उसमें आप थोड़ा ऐड करना, या शाम को खेलने को जाता है तभी थोड़ा ऐड करना. मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. नॉर्मली द रूल ऑफ द थंब इज, जितना भी उसका बच्चे का उम्र है, 5 साल होगा तो 5 ड्राई फ्रूट, अपना जो मुट्ठी में जो एंड में आता है ना, टिप में नीचे, उतना ड्राई फ्रूट बस. बहुत ज्यादा मत देना, ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से नौशिया होता है. तो 5-6 टुकड़ा बस हो गया. डब्बा में डाल सकते हैं या खेलने को जाते टाइम 4-5. तो इससे क्या है, उसका प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ड्राई फ्रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्प्राउट्स दे सकते हैं, इवनिंग में स्प्राउट्स दे सकते हैं, डब्बा में ड्राई स्प्राउट्स दे सकते हैं. चीज इज अ वेरी गुड. ब्रेड बटर के साथ में थोड़ा चीज भी डाल देना. So these are the ways by which you can add. Evening आने के बाद कुछ खाएगा तो थोड़ा सा कर्ड्स भी दे सकते हैं. कर्ड्स इज वेरी गुड इन आवर ए क्लास प्रोटीन है. नॉनवेज वाले लोग एग भी दे सकते हैं. सो डिपेंड्स, आप कॉम्बिनेशन बना के नॉर्मली आप 2 ए क्लास और 1 बी क्लास पे कोशिश करें.
हमारा इधर क्या होता है, खाली दाल दाल सब्जी दाल सब्जी दाल सब्जी रोटी खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, कर्ड्स का भूल ही जाते हैं। तो कर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। क्या है, ऑलमोस्ट 10 ग्राम, और इसमें मैंने ये रूल ऑफ 10 दिया है, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल 2 अंडे में 10 ग्राम, ये 10 ग्राम है तो आपको इजी है, स्नैपशॉट लेना। एक मीडियम कटोरी दही 10 ग्राम, 3 स्लाइस चीज 10 ग्राम, 2 अंडा 10 ग्राम, 50 ग्राम पनीर। आप बोलेगा ये 50 कैसा गिनने का? तो नॉर्मली क्या रहता है, जो 1.5 इंचेस बाय 1.5 इंचेस का पनीर का क्यूब रहता है, उसका 2 से 3 स्लाइस इज इक्वल टू 50 ग्राम। सो 3 क्यूब्स ऑफ 1 to 1.5 इंचेस वाला इज इक्वल टू 10 ग्राम। सिमिलरली ऑल नॉनवेज जो वो साइज का आता है 1 to 1.5 इज इक्वल टू 10 ग्राम। एंड सोया अबाउट 1 स्कूप या 1.25 स्कूप कैन गिव यू 10 ग्राम। Similarly, 1 medium katori will give you 10 grams. 1 medium katori dal will give you this thing. And nuts 25 grams. Same 25. अब छोटा सा आपका मुठ भर में जो एंड में आता है उतना देंगे तो भी बस। तो इस तरह से क्या आप डाइट को बना सकते हैं। You have to modify the diet to see that it is including a lot of proteins. ये आप फॉलो करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगा। अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा, घर पे है बच्चा तो थोड़ा चीज डालना, तो थोड़ा सा ये, और एक हफ्ते में 1-2 बार जंक फूड खाने से कुछ नहीं होता है। अभी से ऐसा नो जंक फूड ऐसा बड़ा रूल भी मत बनाना, बच्चा भी फिर बहुत गर्म हो जाता है। उसके फ्रेंड्स लोग बोलता है मैं इधर खाया मैं उधर खाया, फिर वो नहीं खाया तो उसको इरिटेट हो जाता है। इसके लिए हफ्ते में एक फ्राइडे और संडे एक आइटम खाने से कुछ उल्टा सीधा नहीं होने वाला है। ओके, एनी अदर स्लाइड है सर? Yeah, That's the last slide. I think we have covered a lot, and I would thank Bhaktivedanta the opportunity. At least I was able to give important and homeopathy में जो मैं conditions बोला, ये conditions हम लोग treat कर रहे हैं, बहुत अच्छा result है and excellent है, results are phenomenal and I vouch for it. And in case there are any questions or any doubts or anything, you can contact me, or you can contact now, or you can ask now, and I'll be much more than happy to answer it. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Thank you so much for this lovely session. I don't think there are any questions right now, but however, if anything comes into the chat box, we will get back to you. I request all our audience to kindly, we are sharing a feedback form. We request you all to kindly fill up the feedback form, mention the topics that you all would be interested, so we can do some more interesting similar sessions in the future. I also request all our audience to kindly subscribe for our YouTube channel, so where you all can see our previous session videos also. Thank you, Dr. Nambiar, and thank you, Dr. Subramanian. Thank you very much. On behalf of Bhaktivedanta Hospital, I thank both of you for this wonderful session. Thank you. Thank you.